Yeah. So now, Muhammad, before we jump to trigonometry, and as we know that trigonometry is affected by triangles, we will be learning about how many different triangles are there. Now, first triangle we're really talking about is equilateral triangle. Equilateral triangle. Now, how does an equilateral triangle works? इक्वलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के। सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं एक दूसरे से। लेट मी जस्ट राइट, सपोज दिस इज x, this is y, and this is z. This one is x, let me just point at degrees, ठीक है। now मैंने ये कहा कि सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर है, and if I take a dummy number I can say that this is 3 centimeter, this is 3 centimeter, and this is also 3 centimeter. नाउ मैंने प्रीवियसली एक चीज बताई थी कि जब भी ट्रायंगल के अंदर हम साइड्स को चेंज करते हैं, जब भी हम ट्रायंगल के अंदर साइड्स को चेंज करते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। सपोज लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, if I have this triangle and I have let me just copy this again, and I have this triangle. Now if I look at these two triangles, if I mention this as for example, this is 14 centimeter and this is 3 centimeter. Okay, so मुझे दिखने में ही नजर आ रहा है that this angle is greater. Let me just point at x and let me just point at y. Just by looking at the shapes, जब मैंने कैलकुलेट भी नहीं की इनकी साइड्स, I don't know the angles, I don't know the angles, x could be different, y could be anything, but just by looking at the shape I know that x is greater than y. x is greater than y. और ये सिर्फ हमने देख के लगाया है, we haven't measured, but this gives me the idea कि opposite sides, okay, let me just write the sides opposite to the angle, the sides opposite to the angle affect how large or small the angle is. Now, if I look at this one, it had the side of 3 centimeters and this one has 14 centimeters. So I can see that the length with 14 centimeter has an angle greater than the other one, जिसके अंदर 3 centimeter है। इसका मतलब क्या हुआ मोहम्मद? कि my sides will be affected by the angles. Now, if I jump back to here, I can see that all of the sides are same. This is 3 centimeters, this is 3 centimeters, this is 3 centimeters. क्या हम लोग इसमें से कोई डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इधर तो मुझे दिख रहा था ना कि यहाँ 3 सेंटीमीटर की साइड है और यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की साइड है। We could differentiate that the one with the greater length had a greater angle. The one with the greater length had a greater angle. So here, यहाँ पर तो y, x और z तीनों के अंदर तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड है, लेट मी जस्ट शेड इट, जैसे ये है जिसको मैंने येलो शेड कर दिया है, और ये y हो गया, और ये हो गया वाला जेड कलर कर दिया, और ये हो गया ग्रीन। अगर मैं इन सबको देखूं, सबकी साइड्स क्या हैं? सेम। सबकी साइड्स क्या हैं? सेम। ऑल ऑफ देम हैव द सेम साइड्स। सो अब मैंने पहली बात करी, साइड चेंज करने से एंगल चेंज होता है, यहाँ पे तो सबकी साइड सेम है। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ ट्राइंगल्स एंड दिस वन इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत है? दैट ऑल ऑफ द एंगल्स आर सेम। all of the angles are same. So if I can say all of the angles are same. In other words, I can say that now just by writing this statement I can find out the value of x, y and z. Now हमें ये फॉर्मूला पता है and we have learned about it that the interior angles of any shape, interior angles of any shape are can be found out by the formula that I'm just writing. 180 multiplied by n minus 2
180 multiplied by n minus 2, where n is the number of sides. And in ये इस चीज की जरूरत तो नहीं है, but we previously already know that all of the sides in a triangle have the sum of 180. Just for an extra information, I'm just writing this moment. I can just write 180. 3 minus 2, and 3 minus 2 is basically 1, so it will get me the answer 180. So basically sum, it's not interior angle, sum of interior angles, ताकि कोई confuse ना हो जाए. हर साइड का एंगल 180 नहीं होता, सम उनका 180 होता है. तो अगर मैं बोल दूं कि उनका सम 180 है, तो कैन आई से दैट x plus y plus z is equals to 180? I can say it, yeah. So if x plus y plus z is equals to 180 degrees, so I can just tell you that क्योंकि इन सबकी साइड सेम होगी, तो आई कैन जस्ट गिव इट अ कॉमन थिंग दैट 3x. नाउ कहेंगे हमने x plus y plus z को 3x लिख दिया, क्योंकि मैंने ऊपर यही कहा कि सबकी साइड्स क्योंकि सेम है, सबके एंगल्स सेम है, तो मैं कहता हूँ y भी x के बराबर ही होगा, z भी x के बराबर होगा. अब ये आपकी मर्जी है, you could have written it 3y or 3z, same thing, no problem. So 3x is equals to 180 हो गया, or I can just write that x is equals to 60 degrees. And that is how I got my answer. That will be that all of the sides will be equals to 60 degrees. This is the first case that we have. So now, so I can just write it like this, 60 degree and 60 degrees. This is the first thing that we learned. And this triangle is called equilateral triangle. Now, moving on, the second triangle that we will be learning about is called isosceles triangle. That is called isosceles triangle. Now, isosceles triangles has some similar properties as equilateral triangle, and that will be about the size. Now, isosceles triangle. Now, in isosceles triangle, let me just bring out the shape first. Yeah, this is better. Now, अब isosceles triangle के अंदर, let me just mention the sides. Yeah. So in isosceles triangle, you should learn that in isosceles triangle, you have two same sides. You have two same sides. अभी जो हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, that all of the sides were same. Oh, I just forgot to mention. Okay, मैंने लिख तो दिया कि 3 सेंटीमीटर है. एक और चीज होती है कि all of the sides are same. ठीक है, all of the sides are same. और इसी की वजह से, क्योंकि सबकी साइडें बराबर हो रही थी, तो इसकी वजह से सबके एंगल भी बराबर हो गए थे, और जिसकी वजह से हमने एंगल लिया था 60 डिग्री का. अब आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ साइड्स बराबर होती हैं. ओके, यू हैव ओनली टू सेम साइड्स. सिमिलर नहीं, सेम की बात करो. ठीक है, सेम साइज का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ इट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी. ओके, अगर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 2 ही सिमिलर साइड होती हैं. वो कोई सी भी हो, वो आपको देखने से पता चल जाएगा. कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, वो तो मुझे दिखने से ही छोटी लग रही है. तो कोई दो आपके पास सिमिलर होंगी. अब वी कैन डिराइव कि अगर मेरे पास दो सेम साइड्स हैं, वुडंट आई ऑल्सो हैव टू सेम एंगल्स, है ना? व्हाई? नाउ आई जस्ट टोल्ड यू अबव दैट अगर मेरे पास लेंथ से एंगल वेरी कर रहा होता है, तो इफ वी हैव टू लाइंस, लेट मी जस्ट शेड देम, दिस वन एंड दिस वन. तो मुझे ये पता है कि आई नो दैट this one, let me just mention it as x, and the yellow one will be y. Okay, y. Now y के corresponding the side is 4 centimeter, और x के corresponding भी side जो है वो है 4 centimeter. Any difference in the sides? So अगर sides में कोई difference नहीं है, तो क्या होगा? Angles will be equal to each other. You have two same angles. Okay, और इसमें कोई याद करने की चीज नहीं है. Just look at the figure, और triangle ये आगे पीछे, we can just rotate the shape, and it's still going to be easy for you to understand कि कौन सा angle किसके बराबर है. Now इसके अंदर we can just let me just give you a for example, supposedly if it has 2 centimeters, so this angle could be anything. Okay, we don't know this angle. Let me just mention that as that. So z
could be anything. The angle Z depends upon what the values of X and Y are. Supposedly, if X is 40, so Y will be also be equal to 40 and Z will be something, okay? And if I change the values of X and Y, the Z will be changed accordingly. Now, this is just a general thing that I told you. So now, in isosceles triangle, what I just told you, two same sides. So I just messed up this whole triangle. Let me just draw another one. Yeah. So if I just draw this one, a larger one, basically, yeah. So basically, whenever we're drawing a isosceles triangle, we draw these two lines. Okay. Now, why do we write these two lines? To correspond that these two angles are same. Do you understand, Mohammed? कि अगर कोई देख सके तो वो फौरन ही जज कर ले कि okay, these two lines tell me that all these angles are same, and also these two sides are also equal to each other. Okay, it could be rotated, it could be something like if I change the sides, if I just moved it, rotated it 90 degrees or rotated it 270 degrees, it is not going to matter. You're only going to see these two things. Let me just highlight them. Yeah, these two things, जिसकी वजह से you can just look at the like with these things and you can understand कि कौन सा angle किसके बराबर है. Now, one more thing. Yeah, so these two will be equal to each other. So now the problem arises that sometimes we are asked to find out the values of Z, X, or Y. So if I just give you an example, supposedly this is 50 degrees, and I just ask you to tell me the value of Z. Tell me the value of Z. Z is unknown. Okay, we don't know the value of Z. So if you were given this question, so I can just directly understand, Muhammad, okay, if this one is 50, so this one is also going to be 50 degrees, isn't it? If this one is 50 degrees, so automatically, even if I don't know, even if the questions does not clearly states, these two lines are already telling me that if this one is 50, so this one is also going to be 50 because the angles are going to be same. Okay, so don't be just rely on the question. Yeah, the question में क्या details there. So I know that the sum of the angles is what? The sum of the angles is equals to 180 degrees. The sum of the angles is 180 degrees. अब अगर sum 180 के बराबर है, and I already know the two sides, so I can just directly write कि 50 plus 50 plus Z will be equals to what? 180 degrees. And if I solve it, I can just write it that Z plus 100 will be equals to 180 degrees. And if I just bring 100 to the other side, it will be 180 minus 100 degrees. Then the value of Z will be 80 degrees already. Okay, so I can just write that Z is equals to 80 degrees. That will be my answer. So this is how, Muhammad, we learned about isosceles triangle and equilateral triangle. Now these are somehow similar to each other because they have a common property ke due to the sides we have similar angles. That is about two triangles. Now we will be moving us